Hello and a very warm welcome to this special I'm Neha Bhardwaj Alter. Today is a special edition of Game On. It's a proud moment for India. Neeraj Chopra has created history as he clinched the gold medal in the men's javelin throw event at the World Athletics Championship held in Budapest, Hungary. It's a huge moment in Indian athletics. He won a silver last time in Oregon and then turned that color to gold. So, how big is this achievement? Does he sit right at the top in the pantheon of greats? Is he the greatest ever? What makes Neeraj Chopra so special? Why is it that we all feel like he's a part of us? Why do we feel so connected to Neeraj Chopra every time he performs? We will be talking about all of that. We'll be celebrating his achievement. We'll be celebrating the phenomenon of Neeraj Chopra. I'm joined by Samarjit Singh. He's the coach, javelin coach of the national team. He joins us here. Norris Preetham, a senior journalist, will also be with us, and we'll also try to get Ashwini Nachappa, Olympian and Arjuna awardee, on the show to look at Neeraj Chopra's achievement. But first, before I go to any of my guests, the golden boy of Indian athletics etched his name in history by becoming the first ever Indian athlete to secure a gold medal at this prestigious championship. Neeraj's remarkable achievement unfolded in the early hours of Monday morning as he went head-to-head with competitors from around the world, displaying exceptional prowess. He recorded a throw of 88.17 meters during his second attempt. The first was a foul. The second attempt was his best attempt, solidifying his dominance throughout the event. Pakistan's Arshad Nadeem, another formidable contender, he closely trailed Neeraj's achievement. Eventually, he won the silver with a throw of 87.82 meters. The third spot on the podium was secured by Jakub Vadlec of the Czech Republic, who won the bronze with 86.67 meters. I am joined by Samarjit, who, like I said, is the national team's javelin coach. He's also coached Kishore Jena, the other Indian in that final. There were three Indians, which was also a first ever to have three Indian athletes take part in that javelin event at the World Athletics Championship. But Neeraj Chopra, we'll talk about him, the man with the golden arm. Look at that. I mean, it's an overflowing cabinet for Neeraj. There are lots of gold medals. There is one silver, which was at the World Athletics Championship last year, and now he's made it to gold. Samarjit, first reaction from you. How big is this? The fact that firstly Neeraj Chopra winning the gold. Namaste. सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा विनिंग गोल्ड, ये कितना, मतलब आप बताइए कि कैसे करते हैं ये? अभी तो इंजरी से भी वापस आ रहे थे. हाउ डज ही डू इट? जी मैडम, हमारे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई. ये हिस्ट्रिकल डे था कि नीरज ने कल मेडल जीता. सभी टाइटल उसके पास आज मौजूद है. हमारा जो काफी लंबे टाइम से ओलंपिक मेडल का भी जो था वो सपना नीरज ने पूरा किया है. और हमारे तीन खिलाड़ी जो फाइनल में पहुंचे हैं, किशोर जैना और मन्नू डीपी, ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इंडिया के इतिहास में पहली बार तीन खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंचे थे. तो ये सारा श्रेय हमारी AFI, साई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो जिन्होंने इतना हमारा प्रयास करके हमें फैसिलिटी, योगदान दिया और हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं. एक बात बताइए, कल जैसे नीरज आए तो हमने पहले ही देखा था समरजीत की जो क्वालिफिकेशन था उसमें भी उन्होंने एक थ्रो किया, पहला वाला ही, और वो इतना बेहतरीन था कि उसके आगे जरूरत ही नहीं पड़ी. कल पहला फाउल हो गया. याकूब एक बार टॉप पे थे, अरशद भी उनके पीछे पीछे ही चल रहे थे नीरज के. तो नीरज में ऐसा एक क्या है कि वो बिल्कुल इवेंट को समझ लेते हैं कि क्या कंडीशंस आज की रहेंगी और उस हिसाब से वो अपना जो एक थ्रो है वो करते हैं. जी मैडम, नीरज अभी काफी बेहतरीन खिलाड़ी है और इसने काफी कंपटीशन बड़े लेवल पे खेल लिए हैं. और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत कूल रहता है, अपने आप को प्रेशर कम आने देता है. अभी कुछ पहले इनके इंजरी होने के कारण
ये थोड़े थे कि 100% देने पे, मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उसको चीज को लेके, पर कहीं ना कहीं इनके वो माइंड में था कि मेरा ग्रोइन इंजरी ना आए, उसको भी देखते हुए इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। किस तरह का प्रेपरेशन इनका रहा? क्योंकि जो एक ग्रोइन इंजरी है उसकी रिकवरी, अच्छा उस पे जिस तरह का प्रेशर पड़ता है, तीन चीजें जो कि जैवलिन में बहुत ज़रूरी है, एक तो शोल्डर की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एक हिप की मोबिलिटी, एंकल की, उसमें आप एक आपका लैंडिंग लेग होगा, एक ब्लॉकिंग होगा, तो एक तरफ तो एक क्रॉस करना पड़ता है। तो आप बताइए कि किस तरह की उनकी प्रेपरेशन रही इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके, और जो इंजरी को ओवरकम किया वो कैसे किया समरजीत? जी, इनसे मेरी एक दो बार बात हुई है। इनके साथ क्लाउस सर लगे हुए हैं, एफआई हमारी साथ में वर्क कर रहे हैं, ज्यादा डीपली उनको नॉलेज है। और मैं किशोर कुमार जैना के साथ अटैच हूँ, मुझे एफआई ने किया हुआ है। तो इनका जैसे बात होती थी तो थोड़ा इनको प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बेहतरीन रिकवरी की है, अपने आप को बचा के, और फिर दोबारा से कम बैक करना एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे मेडल है। Injuries are a huge problem with athletes, and for him to be able to recover and be this consistent, I mean, look at some of the other athletes in this. There's Anderson Peters, who did not even qualify for the final. He beat Neeraj Chopra in the last World Athletics Championship, but this time he didn't qualify. So consistency is also something that is a huge plus when it comes to Neeraj Chopra. Norris Preetham, a senior journalist, someone who's covered Olympic sports for a really long time, he joins us here. Norris sir, thank you so much for joining us here. अभी समर से we were just talking कि क्या preparation रही, and coming back from injury वो कैसे हो सकता है. I want to ask you, just for Neeraj and his performance, where would you place him now that he's got this gold as well in the pantheon of greats? Where will Neeraj Chopra be seated? See, Meha, the thing is that once you become a champion at one level, maybe like Asian Game, Commonwealth, he has done everything. So he is at par, or in fact better than anybody else at the moment. But once you see that maybe the first 10 or first 15 are more or less of the same class, someday somebody might strike, the other day he may fail. I mean, let's hope and let's pray that Neeraj doesn't fail. But this is what happens with this top class athletes. They are of the same level. So, but maybe like in Hindi they would say, "Uska kal uska din tha." So maybe it was his day yesterday, and let's hope he does well and he continues to do well. And like the coach was saying, that he had to overcome injuries, and javelin is one thing where elbow is always susceptible to injury, always. But I don't think there is any javelin thrower in the world who has not suffered either an ankle or a javelin or an elbow injury. He was very lucky that he went to Dr. Padiwala, who was kind of a god to him, and that's what he told me also, that all because of him that I'm continuing. Otherwise, maybe he would have been back to village. And like many athletes before him who were injured, but they were not as lucky as Neeraj to get a Padiwala in his team. So I think he is one of the best, or at the moment the best, otherwise one of the best, and maybe we'll see him doing better things in Paris, inshallah. ओके समरजीत, एक और बात ये भी है कि जहाँ पे टेक्निक की अगर बात करें तो नीरज की जो टेक्निक है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैवलिन में एक तो हम देखते हैं कि बिल्कुल जैसे बिग बल्की स्ट्रेंथ होती है, और एक होती है कि आपकी टेक्निक अच्छी हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो। तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं नीरज के परफॉर्मेंस को, और कोई सिमिलैरिटीज आपको इनके बीच में और ज़ेलेज़नी के बीच में लगती हैं, जो इनके रोल मॉडल भी रहे हुए हैं? वो जो एक 90 मीटर का मार्क की बात करते रहते हैं सभी लोग कि वो कब आएगा, तो क्योंकि वो भी ऐसे बहुत बड़े बल्की टाइप के खिलाड़ी नहीं, प्लेयर नहीं थे, ये भी नहीं है उस तरह के एथलीट। जी मैडम, इनका ये है कि ये रिदम बहुत अच्छा है, जो अटैक ऑफ फोर्स से ये आते हैं, और लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी आपने इसकी कई वीडियो में देखी होगी कि पूरा आर्च बन जाता है,
पीछे से पूरी रेंज लेके और ये ब्लॉक्स लगाने के बाद एक अच्छी उसको रेंज देते हैं, वो काफी बेहतरीन है इनका। और रिदम सबसे बढ़िया लगता है मुझे इनका, और लास्ट तक इनका जो अटैक है बहुत ही प्यारा है। और ये इसी वजह से ये मतलब बने हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। जल्द हम सभी को यही उम्मीद रहती है कि इस बार 90 हो और इंडिया हिस्ट्री फिर से दोबारा से क्रिएट करें, और ये जल्द थ्रो लगाएंगे, हमें उम्मीद है नीरज से। और बहुत ही मेहनती और अच्छे व्यवहार के इंसान हैं नीरज चोपड़ा। क्या आपको लगता है कि नीरज चोपड़ा की वजह से जो इंडिया में अभी जो आप जैसे किशोर जिनको आप खुद कोच करते हैं वो अभी फाइनल में थे, है ना, और डीपी मनु की आप बात कर रहे थे, वो भी फाइनल तक पहुंच पाए। एक बड़ी बात है जैवलिन में 3 इंडियंस फाइनल में हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। एक वो बैरियर है वो डेफिनेटली नीरज ने तोड़ा है। एक वो 80 मीटर का पहले बैरियर बात कर लेते हैं कि एकदम से अब वो एक विश्वास जागने लग गया है सभी दूसरे एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं। जी मैडम, बिल्कुल। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक ताजमहल के बारे में सुन लेना और एक ताजमहल को जाके देख लेना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। पहले हम जब करते थे, थ्रो करते थे, तब 85 मीटर के थ्रो देखने के लिए हम कैफे में जाते थे या वीडियो देखते थे कि यार ये कैसे थ्रो करते हैं। ये ज्यादातर सुनने को मिलता था ये बाहर अदर कंट्री के ही कर सकते हैं, हमारे ये पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड में 204 कंट्री हैं, इतनी थ्रो नहीं कर सकते। लेकिन नीरज ने जो एक पर्दा था, जो एक वो चीज को उठा दिया कि हम भी इसमें मेडल ला सकते हैं, दुनिया के में विजेता बन सकते हैं। तो उस चीज को जब उन्होंने बैरियर तोड़ा, ओलंपिक मेडल आया। छोटे बच्चों से ले आज आप देख सकते हो कि छोटे से छोटा बच्चा जेवलिन के बारे में जानता है। जब वो चीजें बातें होने लग जाती हैं तो और ज्यादा टैलेंट हमारे पास आता है जिसको हम निखार सकते हैं। उस चीज का जब 80 मीटर का बैरियर तोड़ा, फिर इसने 85 का तोड़ा, तो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हुआ, तो ये चीज लगने लगी कि ये तो पॉसिबल है। सभी बच्चों को ये चीज लग रही थी कि हम भी देश का नाम कर सकते हैं और हम भी 85 मार सकते हैं। अब हमारे बीच में ये ओलंपियन मेडलिस्ट है, हमारे बीच में ही 90 मीटर टच करने वाला इंसान है, तो हम क्यों नहीं, वो भी हमारे जैसे हमारे बीच से गया। तो ये बहुत बड़ा हौसला है। चलिए, लेट्स लिसन टू व्हाट नीरज चोपड़ा हैड टू से आफ्टर दैट ब्रिलियंट विन। नीरज, आज हम सवाल नहीं पूछेंगे जी, आप बताओ। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही चीज, यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है। कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल अभी अपने पास है ये। और अभी अगले और कॉम्पिटिशन्स है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज्यादा जोर लगाएंगे। 4 और 5 थ्रो पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस, क्योंकि 1-2 पे काफी क्लोज था जी। उस समय आपका माइंडसेट क्या था कि आप मुझे क्या करना चाहिए? बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक की निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी, पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें। तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे, थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया। और मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा सोच रहा था थ्रोइंग के बारे में। मैं बहुत ज्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रन में ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है। तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रनवे फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज मुझे करनी है। आज भारत वालों को क्या बोलोगे? हाँ जी, भारतवासियों को क्या? भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, कुछ भी कर सकते हैं। आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। वंडरफुल, ऑल 3 of us are smiling। हम तीनों के चेहरे पर खुशी है, एक स्माइल है, क्योंकि ये कितना बड़ा अचीवमेंट। और जिस तरह से ये समर, एक मैं इनके बारे में खूब बताइए, पर्सनालिटी के बारे में बताइए, क्योंकि नॉरिस सर और हम तो बस दूर से देखते हैं और ये 1-2 कुछ इंटरव्यूज जो करे हैं उसमें इनसे हमने बात करी है। पर आप बताइए कि पर्सनालिटी वाइज ये इतनी एक एफेबल पर्सनालिटी, क्या कहेंगे ना, बहुत फ्रेंडली, सब इनको पसंद करते हैं, उस तरह की पर्सनालिटी है नीरज की। जी मैडम, हम काफी लंबा टाइम इनके साथ रहे भी, अब तो जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं बाहर, और बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ा ही शांत स्वभाव का और मिलनसार है। तो इनका हमारी जैसे बाहर आपने देखा होगा, ये फैंस के भी पैरों के हाथ
बड़े बुजुर्गों के लगा रहा था, तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना, तो ये हमारी एक मतलब वर्ल्ड में हमारी एक संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करता है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो हम इस तरह से मिलते हैं, किसी को हाथ जोड़कर हम दिलों में राज करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, कभी भी इसमें ये चीज नहीं देखने को मिलेगी कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है या किसी से बात ना करे, तो बच्चों से भी बड़ा अच्छे से प्यार से बात करता है और बहुत ही अच्छा लड़का है। और मेहनत यही इसके साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसका मेडल आता है और ये आगे भी बना रहे। I have just received a call from Adille Sumariwalla, the AFI president, and he is going to join us in a bit. तो आदिल सर भी आ रहे हैं शो पर, मैं अभी नंबर पास ऑन कर रही हूँ हमारे प्रोड्यूसर को। बट नॉरिस सर, this is wonderful to see as an Indian, right? You've covered Olympic sport for such a long time. To see that on the final day you have Indians in 3 events. 3 Indians in one event. There is 4 into 400 meter relay. There is Parul. There is of course Neeraj, Kishore and DP Manu. How big a moment is that for Indian athletics? Well, it's a very, very big event for Indians and for especially the followers of track and field. And my biggest regret in life is that, you know, I covered the first World Championship in 1983 in Finland. After that, I went to Stuttgart, hoping one Indian athlete would do well, at least reach the final or something. It never happened. Went to 6 Olympics, we couldn't see. And I missed the Tokyo Olympic Games because of pressures of COVID. And then I missed yesterday. And here he wins the medal. So I think it's a big regret for me. And as far as personality of the coach was explaining, when he came back from Tokyo, so and when he came to his village, I went to his house, and when he knew that I was there, he opened the door for, and I was hoping that I'll have to ask somebody, but he opened the door, and the first thing, like most Indian athletes do, is he just came and touched my feet. And he said, "Thank you very much, sir, aapka aane ke liye." So it was a very, very emotional moment for me. And then he wouldn't let me go back. He said, "No, we have a room upstairs. You have to stay." We had dinner together. We spent 3-4 hours. There was great difficulty. I told him, "No, I have to go because my wife is alone at home." Immediately, he took my mobile from my hand and went into a recording and sent a message to my wife, "Madam, आप नहीं आई, आप भी आती तो अच्छा रहता, सर आए हैं और नेक्स्ट टाइम आप दोनों आना और हमारे घर में रहना." So I think this is he is a very, very kind of a different kind of a personality. There are people who are very arrogant. Sometimes, you know, if not even arrogant, you know, it comes into their head. And when he came back from Tokyo, you know, where he went to meet Ranbir. Ranbir shared a room with him in a Panipat locality when he wanted to train at the village, at the stadium, Shivaji Stadium. So he went to Ranbir, Ranbir is a challenge athlete. So he brought some gift for him from Tokyo. Then he brought him to Delhi in his car and took him to mall and said, "Okay, buy whatever you want to go, and I want to pay for him." And he actually bought him a lot of gifts. This is what Ranbir has told me. So I think he is a complete package of an athlete, of a human being, and a great human being at that. So I think it's this is something phenomenal that has happened in India, and especially in if you see in athletics, track and field, India was never a strong country in throws. Maybe we were very good at the Asian Games level and shot and put and discus and hammer like Praveen Kumar and all, but javelin was the weakest event in Indian athletic system. Gurtej Singh and all, I think he took part in 1984 Los Angeles Olympic Games. After that, no Indian has ever even taken part in any meet, in any world level meet. And he came and won. Now, as the coach was saying, everybody wants to be a javelin thrower. In his village, there are people who are enrolling to become a javelin thrower now. Javelin has become a buzzword in Indian athletics now. Absolutely. You know, it's like Michael Johnson of Indian athletics, I would say. I'm sorry to just cut you short because Adille Sumariwalla, the president of the Athletics Federation, Indian Athletics Federation, he is here. He is joining us on the phone line, sir. Mr. Sumariwalla, first of all, congratulations. What a feat by Neeraj. And as I was just talking to, I have Norris Preetham, journalist, senior journalist with me, Samarjit Singh, who's the national coach. He's here. Sir, we were just talking about how
fantastic it is to see 3 Indians in javelin. Then you had 4 into 400 meter relay. Then you had Parul, and it was just such a wonderful day, such a glorious day in Indian athletics, sir. Absolutely. I think our athletes have performed to what they had promised to perform. Some of them didn't perform as well, but these Parul really smashed the national record, which was a very tough record set by Lalita Babbar at the Rio Olympic Games in 2016. For a long time, the Asian record for the relay was with India, then at around 3 minutes. Then Japan broke it, and it was a real treat to see that the Indian relay team has run below 3 minutes in 2 days. Yesterday was just unlucky that 2 of our athletes, one had to jump over another athlete who fell, the other one had to go around during the exchange. But incredible that in the top 6 javelin throwers, you have 3 Indians there. And this just goes to show the commitment, the work, the ecosystem that the Athletic Federation of India has created around the athletes. So 4x400 was one of the events that was shortlisted 10 years ago. We had brought in Galina coach, who herself was an Olympic medalist. We did well for a while. We came up to 3 minutes. We couldn't break 3 minutes. We changed the coach. We brought in Jason from Jamaica. Parul and Sable was just unlucky that he just totally misjudged that race. Otherwise, Sable would have had some outstanding performance here. He was in very, very good shape. So Parul and they are training with Scott Simmons at Colorado Springs. Right. So it's just not. And for javelin, we've had 3 foreign coaches. We started with Gary Calvert, then we had Uwe Horn and Klaus, also a biomechanics expert. So all these, when we started javelin, when I was competing in the 80s, the nationals was won at 65 meters, 66 meters, 67 was then the national record. Today, you have 10 javelin throwers throwing close to 80 meters. Wow. Between 75 upwards. So we identified the event, we got the people. Long jump and triple jump was another event which we identified. We brought in our Romanian coach, one of the best European coaches. Sri Shankar and Aldrin, in my view, were just unlucky on that day. Otherwise, they had some fantastic performances, both having jumped over 840, which is world class, which is absolutely world class. Relay team twice in 2 days, running below 3 minutes, absolute world class. So, throwing over 80 meters, absolute world class. So it's you can see the sort of ecosystem that the federation has created. You can't do it with just one coach and one athlete. It's the coach, it's the athlete, it's the physio, it's the doctor, it's the masseur. It's creating a whole ecosystem, and that is what we have done. We are doing coaches education on one side. We are doing technical officials education on the other side. So it's when the whole ecosystem comes together, that's when you get performance. And what a performance it has been, sir. There seems to be a complete, what do I say, there's complete silence after Neeraj's win from last night. We're all trying to contact him. Of course, this was late into the night and, because of the time difference. So I'd love to know what were the celebrations. Contact him. Let me tell you. What? No, there were no celebrations. There were no real. Because Neeraj, by the time he finished the press interview with Indian athletes, it was already 12 o'clock. It was already close to 12 o'clock time in Budapest. Yeah, and then he had to go into dope control.
By the time he finished and came home to the hotel, it was past 3 o'clock in the morning. For him, the poor fellow had not even got a proper meal to eat after his great win. He did whatever little he snacked here and there, and now he's fast asleep. So we don't want to disturb him. And basically, of course, the Indian team was going crazy, celebrating and having fun at the hotel. But it's a historic day, and I think he's probably the greatest athlete India's ever produced. An Olympic champion, a world champion, a Commonwealth champion, Asian Games champion, an Asian Athletics champion, a Diamond League champion. I mean, in no sport in India, anybody has come even near parallel to that sort of performance. So to me, he's probably the greatest athlete India has ever produced. Mr. Sumariwalla, I'd also want to ask you about what the preparation was like coming into the World Championship, because I remember after Lausanne, he was worried about the muscle strain, and then of course he missed competitions. This was the big one. So what was that preparation like? No, we had to be very careful, and even here he was very, very careful because he had just recovered from a groin injury. He was just about fit. He had lost a couple of weeks of training, so he wasn't in full load training, and therefore we were worried. We were really worried for every throw that he was throwing, that he should hold out, and the competition was very, very intense and fierce. Remember, the silver and the bronze medalists have both thrown over 90 meters. Neeraj has never thrown over 90. So every throw, those guys were throwing, a heart was in our mouth to say, like, my God, what's going to happen next? So, and we were just hoping that nothing should go wrong with Neeraj's injury and it should not reoccur, because Neeraj was putting in really was putting in everything that he had to ensure that he managed to stay on top. Okay, Mr. Sumariwalla, I'll let you go now, sir. I'm sure you haven't rested well as well, but congratulations once again. And if you do happen to, of course, you will meet Neeraj at some point, do congratulate him and tell him that this country is so proud of him. Thank you once again. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. So that is Mr. Adille Sumariwalla. He is the president of the Athletics Federation of India. He's there with Neeraj Chopra. And what he said there was interesting. He said that by the time the press conference and everything was done, it was already 12. Then Neeraj had to go for the dope test. And then he hasn't had a proper meal to eat. And finally, he's sleeping now. So this was when I tried to ask him, how can we get hold of Neeraj Chopra? We all want to talk to him. We all want to ask him questions, but we'll have to wait just a little bit longer. Let him sleep. Let him rest. He deserves all of it because he is. Now, let's get Norris in. Now, Norris, there Adille saying it that, he is the greatest ever. Do you agree though? Greatest ever Indian athlete? Obviously, I mean, he's done a grand slam of athletics, despite everything that is there. And so he is, of course, the greatest athlete, absolutely no doubt about it. And here I must say that the credit, of course, Neeraj is the winner, all credit goes to him. But there are people behind him which go unnoticed, the sponsors. Earlier there were many good athletes, but they couldn't do well because either there were no medical facilities, there were no technology, there were no doctors, good doctors, there were no coaches. But in his case, I must say that it's a divine intervention that he got everything at the right time, at the right place, and of course his own talent and mehnat, his own hard work, and that has paid dividends. And so I think he's a complete package, and he is absolutely. And I've been talking to some foreign past javelin throwers, like somebody who won the 1972 Olympic Games also, and
lot of praise for him. They said, we haven't seen a consistent javelin thrower like him. Absolutely. I mean, there are people who win one event and they go fade away because of injury. He said he had a massive injury before Tokyo Olympic Games, and just see the luck. If there was no COVID, maybe he would not have won the gold medal in Tokyo, because he would not have been even able to go there, because he had a massive injury. And in that intervening 1 year, when he went to Pardiwala, Dr. Pardiwala, and he recovered. And after that, as we say, the history is made. Yeah. So I think luck, everything, divine, coaches, everything, everyone has played role. And Ishan Marwa that you are showing now in studio, everyone, and the federation, SAI, the government has spent so much of money all the time. He perhaps, one day I was telling his uncle that maybe when Neeraj comes, he may even forget the way to his house. The way he's staying all the time, he's abroad. So he said, yeah, because there are so many changes in the village, and mainly because of him. Yeah. So, and you see his house, a beautiful house, beautiful 3-storied house, lovely, the best house in the whole of Panipat. That kind of house he lives in, and 2-3 bikes standing outside. So there is a lot of changes. And he says, yes, you are right. When he comes, I'll have to go to Panipat city, and to bring him to the village, he may forget the way. So that all has paid, and that is why he is definitely, as Adille said, he is the best. I think he is the best. There's no doubt. And let me tell you one thing, we have yet to see the best. Watch for him in Paris. Absolutely, absolutely. Which is the other thing that I was reading. There was an interview by the great Jan Zelezny. He was speaking about Neeraj Chopra, and he said that his best is yet to come. He said that 30 is when you peak. Javelin throwers peak at 30. So Neeraj is just 25 right now, and if he stays fit, 90 meters and upwards, that's what he'll be aiming for. Yeah, he has to remain fit. Okay. Let's also listen to his relatives who are obviously celebrating, and listening to what they had to say after they got to know about Neeraj's gold medal. नीरज चोपड़ा ने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस बार ये गोल्ड मेडल है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो देखिए बधाइयों का दौर चल रहा है। लड्डू माताजी जो हैं सरोज जी, वो पिताजी को लड्डू खिला रही हैं, क्योंकि आज जो ये खुशी के पल हैं वो फिर से कैमरे में कैद होने की लायक हैं, क्योंकि ये जो पल हैं ये रोज रोज नहीं आते। पहले ओलंपिक में मेडल और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कितना खास पल है ये। जब आप कल आप देख रही थी मैच, तो क्या कुछ धड़कनें बढ़ रही थी कि इस बार भी क्या नीरज गोल्ड लाएंगे? धड़कन तो बढ़ रही थी जी। देखो मुकाबला हो रहा था अभी 3-4 का, देखो भाई कौन सा आएगा। चलो फिर भी सारे देश की दुआ थी भाई बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया। आप सबकी दुआ थी और आपकी दुआ रंग लाई। हाँ, सबकी थी जी, सबकी लाई और मारे के सारे देश की लाई। क्योंकि अब तो नीरज को पूरा देश दुआएं देता है। क्योंकि और बात करूं इस मैच की, तो पहले जो उन्होंने पहले फाउल हुआ था, तो क्या कुछ डर बैठ गया था कहीं ऐसा तो नहीं चूक जाए? देखो जी, वो फाउल होने वाला ने देखा वो तो जी बात में उसमें बाद में पता लग गया है कि भाई फाउल भी हुई थी। तो गेम सारे बच्चा का हो रहा था, दौड़ का भी हो रहा था, उसका भी हो रहा था, तो उसमें रुक कर दिखा रहे थे। आपने मैच देखा था या फिर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी? क्योंकि कुछ कोई जब अपना मैदान में देखा तो था। देखा था। हाँ, मैच तो देखा था। हाँ, धड़कन तो बढ़ रही थी जी, नहीं हो रहा था भाई देखो कौन सा जीतेगा। बार बार ये बात आ रही है कि मैच ये खास था क्योंकि पाकिस्तान का जो प्लेयर था वो सामने था। तो बार सबके सवाल यहीं पर आके, क्योंकि इंटरेस्टिंग यहीं पर बन जाता है कि जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मैदान में हो और उसको जब नीरज चोपड़ा ने हराया, तो सबके लिए ये पल और ज्यादा खास हो गया। जीतन की तो यह है जी, सारे मेहनत कर रहे थे, सारे खिलाड़ी थे बराबर के थे वहाँ, तो कोई सा भी जीत सके था। तो कोई भी, मतलब आप कह रही हैं कि मैदान में जो होता है वो प्रतिद्वंदी ही होता है। हाँ, कोई सा भी भैया, तो सारे मेहनत करके जा रहे, कोई सा तो जीतेगा, कोई सा तो हारेगा भी। हार जीत तो हुए है मैदान में का। बात हो पाई है कोई नीरज से, कोई बधाई संदेश जो आपने यहाँ से कुछ दे पाई है उनको? नहीं, बात नहीं हुई भाई, कोई बात नहीं हुई है। तो क्या और लोगों से बात हुई है, उनके जो कोच साथ में हो या किसी और से भी? नहीं, किसी से नहीं हुई अभी तो।
किसी से नहीं। फोन करेंगे तब वही करेंगे, हम फोन नहीं करते उसके पास, जो बिजी ज्यादा रहता। तो बात कब तक हो सकती है, कुछ ये मैसेज मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो फ्री होएगा, शाम लग भी कर सकता है और कल भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन जब भी फोन किसी से बात होगी तब आपसे तो तुरंत सबसे पहले आपसे बात होगी या पिताजी से बात होगी? नहीं, वो पूरे परिवार से ही करता है, ये कोई जरूरी नहीं है वो खाली किसी हमारे से ही बात करेगा, किसी से भी कर लेगा वो। किसी से भी करेंगे। हाँ। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, तो सब जगह लड्डू तो अब बट रहे हैं पूरे गांव में और आसपास भी, लेकिन खाना क्या बन रहा है? आज तो बहुत स्पेशल है, तो खाना भी कुछ खास बन रहा होगा नीरज की ही पसंद का, भले ही नीरज नहीं बनाया तो सारा होटल पता है। आज हम बाहर से आ रहा है। हाँ, बाहर से आ रहा है जी, सभी का। अच्छा, और आगे उनका अगला चैंपियनशिप कब है? हमने नहीं पता जी कब का। हमने तो घर खाना बनाना और अपना काम करना, मैं इनके चाचे जाना, बापू जाना, हमने कोई मालूम नहीं चीज। इस तरह की बात। There you have Neeraj Chopra's parents, very thrilled by Neeraj's performance, and of course they're all waiting for him to come back so that they can congratulate him. But Neeraj sir is here with us. Sir, that 90-meter mark that everyone keeps asking him about, he himself said it in the media gallery, right? He said, अब वो 90-meter वाला सवाल आप लोग पूछेंगे तो वो भी किसी दिन आएगा. I don't know, is that something that he thinks about? Because there are so many things that he's worried about right now. I think like Adille was saying, Mr. Sumariwalla, he said that, look, we had our hearts in our mouth because we didn't know if both the other guys were had thrown 90 plus. So, you know, whether his groin be okay, whether he'll be able to throw well, there are all of those questions. So, do you think that's even something they're thinking about, or right now it's really just about him being fit, him being in the best shape possible? I think athlete of that level really don't think that I'm going to throw 90 meters because the first perform your best whatever comes that day. I mean, when talking about 90 meters, even Arshad Nadeem, the Pakistani, has thrown 90 meters. Yes. So, but he hasn't won, right? But Neeraj, without throwing 90 meters, has won. So I think sometimes you have to win a title, sometimes you go for performances. I think, personally, I think now that he has won everything possible in Paris, he will definitely, because there will be no, that he won't be saying that I want to be an Olympic champion. Of course, there is no limit to what you think, what you want, what you can, and what you should win, and what you want to win. So after one Olympic, maybe the second and the third and the fourth, and it goes on. But I think, I mean, if I know Neeraj well, he will be thinking of going over solely 90 meters because he knows that he has won everything. So it might come. And this 90-meter business, I think, comes on day when everything is fine, when you are in a good performance, you are psychologically good, you are physically good, there's a wind factor, what kind of a ground you are taking part. This was a new surface where he was throwing the javelin, which was a slippery because once or twice he almost touched the line. He was almost touching. The winning throw could have been invalid also. So all these factors are going into consideration. But I think physically he is definitely prepared for not just 90 meters, many more meters over 90. This is what I personally feel because of his talking to his coaches and talking to him and knowing a little bit of athletics. He is capable any day. It could have been last night also. But because there was competition after one throw, others were just lagging behind, so nobody was really pushing him. Suppose he goes to Paris and he throws 89 point something, and somebody one throw comes from 90. Definitely he will also try and go over 90. So 90 meter throw is within his range, just a matter of day on his day. That's all. Okay, Samarjeet is also back with us, sir. मैं एक और चीज पूछूंगी सर. एक तो ये होता है समरजीत कि यस नीरज चोपड़ा, जैसे आदिल सर ने भी बोला, द ग्रेटेस्ट, बट जो उनके साथ अब दूसरे आ रहे हैं, जैसे आप किशोर को कोच कर रहे हैं, वो भी फाइनल तक पहुंचे. उनकी जर्नी के बारे में बात बताइए कि कैसे वो वहां तक पहुंचे हैं,
आप बिल्कुल, आपका जैसे कहते हैं ना, फ्रंट सीट आपकी है वहां पर, क्योंकि आप उनके कोच हैं, तो वो उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि नीरज की तो हम बात करते रहेंगे, पर हम जानना चाहते हैं कि किशोर, डीपी मनु, ये जो स्टोरीज हैं, इन स्टोरीज में क्या स्पेशल है, तो किशोर के बारे में बताइए हमें। जी बिल्कुल, किशोर कुमार जन्ना ने मैडम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और 5वें नंबर पर रहा वर्ल्ड में। और ये अभी मैडम मेरे साथ ये पीछे जैसे कि बताया कि पूरा सिस्टम एक चलता है, मुझे एफआई ने एज ए कोच इसमें लिया और मुझे प्रूव करना था। और हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही डिसिप्लिन हार्ड वर्कर लड़का है जन्ना। तो उसका टेक्निक, जैसे मैंने उसको पहले उसका रनअप था जो 14 स्टेप का था, तो उसको इम्प्रूव करवाया मैंने, 23 का किया। और उसका टेक्निक जो फ्रंट से वो जाता उसको भी साइड करवाया। तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि बॉन्डिंग, आपका एक भरोसा, जब आप परफॉर्म करते हो ऑफ सीजन में, उसको मैंने प्रिपेयर किया था कि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में एंट्री करना है, तो इतना हमें टारगेट 76 से बात नहीं बनेगा, हमें अचीव करना है। तो काफी हार्ड वर्क हमने किया उस पे, और उसने बहुत ही मन से वर्क किया और हम उस चीज पे पहुंच पाए कि इतना जल्दी टेक्निक को चेंज करना, उसको अडेप्ट कर लेना एक बहुत बड़ी बात है, और जिसका नतीजा हमें आज मिला है। और हम थ्रो लगा पाए हैं कि हमने 84 कंटिन्यू 4-5 4-5 टाइम हमने पर्सनल बेस्ट करते आ रहे हैं इस साल से। बहुत बढ़िया बात है। और 5वें नंबर पे भी एकदम आप पहले जाते ही आप फाइनल में आ जाओ और 5th फिनिश करो, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। समझिए, मैं आपको भी कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी उसके लिए। अच्छा, अब व्हाट यू वर सीइंग ऑन योर स्क्रीन्स आर quotes from Neeraj Chopra's physio. Two people travel with him. If you want to ever get in touch with Neeraj Chopra, either you contact his coach. Mostly Neeraj will never answer. The coach might, or Ishan Marwa, his physio who travels with him, he might. This is what he talks about in terms of his preparation, his fitness. And he says gymnastics was a big part of their schedule. This is Ishan Marwa, Neeraj Chopra's physio, who's saying that while they were preparing, while they were coming back from the injury, gymnastics was something that Neeraj did, which helped him. This is one of the things. He also said, okay, there you have it. He says, we wanted to do a lot of gymnastics initially. When we start our training, we do 4 or 5 weeks of gymnastics. It helps with the shoulder strength, hand grips, wrist strength, elbow strength, triceps. Most of it parallel bars and sometimes the rings. Also, you use a lot of the core. It is not specific to javelin, but for overall fitness, it is good. After 4 to 5 weeks of gymnastics, we start with lifting part. So that's when the strength training comes after this, after your flexibility has been worked on. This is another thing that stands out for Ishan Marwa about Neeraj Chopra. He says the belief. Whatever the situation, there's always a chance to come back. So many times me and the coach are watching and the first 2-3 throws don't go well. Then we are under more pressure than him. He's relaxed inside because he knows that he can pull off a big throw in the end also. During the last World Championships, the first 3 throws didn't go well and I was under a lot of pressure sitting outside. But he came back strong. The belief is the difference between him and the other athletes, and which is so important because at the end of the day, all these athletes right at the top have the skill, but it's the inner belief, the strength, especially in a pressure situation, that pulls them through. We leave you with Neeraj Chopra's post-match PC. I'm going to thank Samarjeet. Thank you so much, Samarjeet. उससे पहले आप आए शो पर. And congratulations to you. There is also Norris Preetham. Thank you so much, sir, for taking the time out to talk to us. That's it then. This is Neeraj Chopra. We leave you with his press conference. And we congratulate him at TV9 as well. So proud. Thank you so much. Goodbye. Thanks for watching. नीरज, आज हम सवाल नहीं पूछेंगे जी, आप बताओ। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको
वो करना बाकी है, कोई बात नहीं। आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल। अभी अपने पास है ये, और अभी अगले और कॉम्पिटिशंस है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज्यादा जोर लगाएंगे। 4 और 5 थ्रो पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस, क्योंकि 1-2 पे काफी क्लोज था। उस समय आपका माइंडसेट क्या था कि आप मुझे क्या करना चाहिए? बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक की निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी, पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें। तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे, थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया, और मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा सोच रहा था थ्रोइंग के बारे में। मैं बहुत ज्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रन में ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है। तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है, और बस 100% रनवे में फास्ट भागना है, और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज मुझे करनी है। आज भारत वालों को क्या बोलोगे? हाँ जी, भारतवासियों को क्या? भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, कुछ भी कर सकते हैं। आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। मैं इमरान अहमद खान नियाजी सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ। When Imran Khan came initially into politics, he thought his personal popularity would be sufficient for him. It didn't happen. The retired military generals are openly saying that Imran Khan is a better choice.